fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continued productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum.
A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive
200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting
Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Yamunanagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors. Begin your beauty journey with Nykaa and get an extra 20% off on your first order. Get unbeatable deals on over 1,800 brands only at... Namely, Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption. In order to achieve scale,
and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology-driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals
will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology, and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to, 1, set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2, upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3, upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Yamunanagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming, and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education.
Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakigadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector
provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. All of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards,
and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts, we will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try, and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President.
As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt-to-GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt-to-GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt-to-GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honourable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly.
giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely, A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20%
to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice.
For IT services companies who want to conclude Advanced Pricing Agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, IND AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on Tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options
are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set-off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set-off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG.
civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global इंजन कच्ची घनी सरसों का तेल, स्वाद और स्वास्थ्य का मेल. Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with the self-declarations,
electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए,
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कर सकता है हमारे इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम में। टुडे वी विल एक्सप्लोर द टॉपिक बजट 2026 एंड आवर theme of today's session is Innovate India, the strategic role of budget 2026 and 27. So let's begin. This is my topic for today's session, budget 26 and 27, driving growth in India's startup ecosystem. कैसे हमारा बजट एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में, हम कैसे इनोवेशन के थ्रू अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है। द थीम ऑफ आवर टुडे सेशन इज इनोवेट इंडिया, द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ बजट। देन हम स्टार्ट करते हैं इनोवेशन से। इन द 21st century, innovation is not optional. It is a foundation of economic power. Yes, जो हमारा इनोवेशन है, जिसको हम नवाचार भी बोलते हैं, आविष्कार भी बोलते हैं, इट इज नॉट कोई एक पिछला हुआ शब्द नहीं है, एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमिक पावर के लिए। द इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा अभी आया था रिसेंटली 2026 का, उसने रिवील किया है कि इंडिया ट्रांजिशन from a fast growing economy to a strategically indispensable global player. हमारा इंडिया जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रूव हुआ है। The Union Budget 2026 to 27 becomes more than a financial document. It is India's strategic roadmap for innovation-led development, positioning the nation for the forefront of global economic transformation. हम इंडिया को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इंडिया को वर्ल्ड मैप पे हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनोवेशन एक आसान नहीं है। इनोवेशन के लिए हमें एक मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन होनी चाहिए। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन को ग्रोथ करने के लिए हमारे पास जो है, देखो, जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही है एज हमारा पिछला जो फिस्कल ईयर रहा है 26। ये हमारी सस्टेन इकोनॉमिक एक्सपेंशन को क्या है दिखाता है। देन हमारे पास है जीवीए, जिसको हम ग्रोस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। ये जो ग्रोस वैल्यू एडेड है 7.3% तक रही है हमारी इंडिया की, और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं 11.21 लाख करोड़ रुपीस का, जो मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को शो करता है। देन ये क्या दिखाता है, इनोवेशन को कैसे हम फ्लोरिश कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन हमारा है कि हम इन्फ्लेशन को स्टेबल कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारी कैपिटल इन्वेस्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारा जो इंडिया है वो एक राइजिंग इनोवेशन प्रोफाइल है। देखो, जैसे ही हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा जो इंडिया है 2019 में 66 पोजीशन पे था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे। अब रिसेंटली 2025 में हमारी जो ये पोजीशन है वो इनहेंस होकर देखो 38 पोजीशन हो गई है। रिमार्केबल 28th रैंक है हमारी जो इंडिया की इनोवेशन प्रोफाइल पर। 26 में भी इसको कंटिन्यू करने का हमारा टारगेट है। ये जो प्रोफाइल है ये सिर्फ हमारी इतना ही नहीं है, हमारा ये प्रोग्रेस को क्या है रिफ्लेक्ट करती है हमारे स्टार्टअप
सिस्टम को क्या है रिफ्लेक्ट कर रही है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या है इलस्ट्रेट कर रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, इन सब को क्या है, इन सब को लेकर हमारे जो इनोवेशन की प्रोफाइल जो है हम बनाकर रख पा रहे हैं। देन आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन। ये जो डिजिटल इनोवेशन है कहाँ कहाँ की जा रही है, देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई है हमारे पास, इसके लिए 2 लाख रुपीस करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं, जिसकी थ्रू 12.6 लाख जॉब क्या है क्रिएट होंगी हमारे इंडिया की स्ट्रेंथनिंग के लिए। देन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, इसके लिए 1.6 लाख रुपीस करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो चुका है, जिसके लिए बिल्डिंग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा सकता है। एप्लीकेशन ड्राइविंग एआई, हमारा जो ये नया बजट है ये फोकस है एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर। ये जो ड्राइवन एआई है इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जा रहे हैं, आधार के साथ लिंक किया जा रहा है, हमारे यूपीआई से लिंक किया जा रहा है, डिजी लॉकर इनेबल किए जा रहे हैं। ये सब एआई मॉडल को क्या है इलिस्ट्रेट करते हैं। देन जीवीए ग्रोथ एक्सेलरेटेड इन फिस्कल ईयर 26, हमारी जो ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोथ है वो एक्सेलरेटेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंटरवेंशन एंड टारगेटेड इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हम इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैपेबल कर पाए हैं। देन आती है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल, द इनोवेशन इंजन। ह्यूमन कैपिटल को इनोवेशन इंजन की तरह लिया गया है। ह्यूमन कैपिटल में हम देखो 2 तरह से इसको क्या है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जा रहा है। डेमोग्राफिक एडवांटेज है, 56.2 करोड़ एम्प्लॉयड पीपल इन फिस्कल ईयर 26। अब तक 56.2 करोड़ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा रही है। 31 करोड़ वर्कर्स जो हैं रजिस्टर्ड हैं ई श्रम पोर्टल पर। हमारे आईआईटीज को प्रमोट किया जा रहा है, आईआईएमएस, एम्स एंड यूनिवर्सिटीज एक्सपैंड की जा रही हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव किया जा रहा है। ग्रोइंग ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियोज, जो एनरोलमेंट रेशियो है हमारी यूनिवर्सिटीज का वो इंक्रीज किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नीड्स, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है हमारे लिए? स्किलिंग फॉर एआई को जानना, एआई को सीखना आज के युग में बहुत जरूरी हो चुका है। स्टार्टअप ओरिएंटेड एजुकेशन रिफॉर्म, जो भी एजुकेशन की जा रही है वो स्टार्टअप ओरिएंटेड है। ऐसी एजुकेशन दी जा रही है एकेडमिकली सिखाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी सिखाया जा रहा है। एनहांस रिसर्च फंडिंग इन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च के लिए फंडिंग क्या है यूनिवर्सिटीज को दी जा रही है, फंड किया जा रहा है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल तक को पहुंचाई जा रही है। हमारा जो लेवल है एजुकेशन का वो इंटरनेशनल लेवल तक किया जा रहा है। देन आता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनोवेशन कैटलिस्ट। इनोवेशन के में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम आधारभूत संरचना आप लोग इकोनॉमिक्स की टर्म्स में आप सुनते हैं, तो इनोवेशन में ये कैसे रोल प्ले कर सकता है? देखो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जो रेलवेज हैं 99.1% तक जो रेलवे नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, जिसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड, ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स। इसका जो डिपेंडेंसी है कार्बन फुटप्रिंट्स पर वो कम होती जा रही है। एयर कनेक्टिविटी है, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को एनहांस किया जा रहा है रीजनल इंटीग्रेशन के लिए। इकोनॉमिक एसेस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए 164 न्यू एयरपोर्ट्स जनरेट किए गए हैं। डिजिटल नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं, डिजिटल नेटवर्क्स जो आजकल 5G की स्पीड पर हम काम करते हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इनेबलिंग नेक्स्ट जनरेशन एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज है वो नेक्स्ट जनरेशन 5G यानी कि 5th जनरेशन में हम अपनी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं आज के टाइम पर। ग्रीन एनर्जी, नियर 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज, जितनी भी कैपेसिटी है हमारी उसमें से 50% ग्रीन एनर्जी है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज से हम क्या है, सोलर पैनल से हम क्या है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। पोजिशनिंग इंडिया एज क्लाइमेट इनोवेशन लीडर, हमारे इंडिया में ये क्लाइमेट इनोवेशन लेकर आएगा। देन आता है हमारे पास स्ट्रेटेजिक
इंडिस्पेंसिबिलिटी फ्रेमवर्क, कैसा फ्रेमवर्क रहेगा हमारे, जो हमारे इनोवेशन को जो ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, हमारी डेवलपमेंट लेकर जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस अ ट्रांसफॉर्मेटिव थ्री टायर फ्रेमवर्क। हमारा जो फ्रेमवर्क है उसको थ्री टायर किया गया है, पोजीशनिंग इंडिया फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ग्लोबल लीडरशिप पर compete करने के लिए थ्री टायर फ्रेमवर्क जो है अपनाया गया है। फर्स्ट आता है एड्रेस क्रिटिकल वनरेबिलिटीज, जिसमें आती है सप्लाई चेन्स को सिक्योर किया जाता है, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाता है। देन बिल्ड डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज, हाई डेवलपमेंट, हाई पे ऑफ टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस किया जाता है डेवलपमेंट करने के लिए, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को इनहेंस किया जा रहा है। ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन, जितनी भी मार्केट है उसको ग्लोबल किया जा रहा है। स्ट्रेंथन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉर वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिटिवनेस, जितनी भी मार्केट है उसको इंटीग्रेट करके वर्ल्ड वाइड लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनोवेशन कैटलिस्ट, ये हमारा हो गया है। देन 5 स्ट्रेटेजिक रोल्स ऑफ बजट, ये हमारा जो बजट अभी प्रेजेंट हुआ है 26-27 में, उसका क्या रोल है हमारे जो है हमारे इनोवेशन में, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल रोल, फंडिंग इनोवेशन थ्रू टारगेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल जो है फंड्स हम दिए गए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम पर फोकस किया गया है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। फाइनेंशियली इनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, किसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स को। स्टार्टअप इकोसिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उसको और ज्यादा बिल्ड किया, और ज्यादा इनहेंस किया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल रोल, इंस्टीट्यूशनली हम अब जो फ्रेमवर्क है उसको रेगुलेट करते हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जितना भी स्ट्रक्चर हम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको गवर्नेंस में, यानी कि गवर्नमेंट कैसे उसको इनहेंस करती है। पॉलिसी कोहेरेंस फॉर इनोवेशन, इनोवेशन कैसे किया जा सकता है, ये भी आता है। देन टेक्नोलॉजिकल रोल, टेक्नोलॉजिकल में हमारा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम। एआई एडॉप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं अपने न्यू इनोवेशन में, न्यू हमारे स्टार्टअप्स में, एंड टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन अक्रॉस सेक्टर्स। सोशल रोल, सोशली हम क्या है, एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया जाता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट टू बिल्ड ह्यूमन कैपिटल फाउंडेशन, स्किल डेवलपमेंट भी की जा रही है ताकि ह्यूमन को और ज्यादा इनहेंस किया जा सके। देन ग्लोबल रोल, positioning India strategically in global, ग्लोबली पोजीशनिंग, हमारी जो पोजीशनिंग है इंडिया की ग्लोबली, वो improve की जा रही है। सप्लाई चेन इनोवेशन नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं अपनी ग्लोबल रोल को, ग्लोबली इसको बनाए रख, जो है हमारी जो सिचुएशन है। टुवर्ड इनोवेशन ड्राइवन इंडिया, हमारा जो इनोवेशन है वो कैसे इंडिया में इम्प्रूव किया जा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन हब, हम इंडिया को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बना रहे हैं, लीडिंग इन एप्लीकेशन ड्राइवन एआई, जितनी भी हमारी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाए जा रहे हैं। हमारा जो सेमीकंडक्टर है इंडस्ट्री का 4.0 कैपेबिलिटीज पर जो है काम कर रहा है, 4.0 कैपेबिलिटीज पर जो है काम कर रहा है। लीडर, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कंज्यूमर टू क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी, अब हम टेक्नोलॉजी नहीं है, एज अ क्रिएटर हम काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे इंडिया में। द इकोनॉमिक सर्वे 2026, जो हमारा रिपोर्ट आई है पिछली, वो रिवील करती है कि इंडिया जो है हिस्टोरिक पॉइंट पर है। फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमी टू नॉलेज ड्रिवन इनोवेशन, हमारा जो जो इनोवेशन का पार्ट है हमारा, नॉलेज ड्रिवन है, ग्लोबली इंटीग्रेटेड पावर हाउस है। बजट 2026 is not merely about numbers, it is about shaping India
गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैम 5 to 10 मिनट्स में दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, उनके नेटवर्क इश्यूज आ रहा है। तब तक किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है। आप सबको सेशन कैसा लग रहा है? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. सबको सेशन कैसा लग रहा है? Ma'am, it's good. तब तक मैम रीज्वाइन करते हैं। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हमारे लिए बजट सुनना क्यों जरूरी है। हम यूजुअली क्या करते हैं, जब भी काम करते हैं हम मनी अर्न करते हैं, यानी वी ऑलवेज अर्न आर हार्ड अर्न मनी। यानी हमेशा पैसा कमाते हैं, पैसे कमाने के लिए काम कर रहे होते हैं। बट ये पैसा हम टैक्स की फॉर्म में किसे दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। यानी गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है हमारे टैक्स को सही जगह यूज करना या गलत जगह यूज करना। ठीक है, तो यानी कि एक कंज्यूमर का या फिर एक ऑर्डिनरी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो भी हमारी हार्ड अर्न मनी है वो गवर्नमेंट वेस्ट ना कर रही हो। इसीलिए हमने इस बजट के अंदर देखा कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मिनिस्ट्री में, अलग अलग जगहों पे क्या किया गया है, बजट दिया गया है। उन्हें एक्सपेंडिचर के लिए मनी दी गई है, जो कि वो हमारे वेलफेयर के लिए, इंडिया के वेलफेयर के लिए या फिर इंडिया के ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट, हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर इतने सारे रिच पीपल्स हैं, बट फिर भी क्या है, देयर इज सो मच पावर्टी। यानी इस पावर्टी के रिडक्शन के लिए कौन कौन से वेलफेयर के स्टेप्स जो है हमारी इंडिया ले सकती है या फिर गवर्नमेंट ले सकती है। इन सब का सॉल्यूशन जो है हमें बजट ऑफ इंडिया बताता है। यानी कि यूनियन बजट 2026-27 यही सारी बातें हमें बता रहा है। अगर हम बात करें कि बजट हमें कॉम्प्लिकेटेड तो लगता है सुनने में, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से हमें सिखाया नहीं जाता कि बजट क्यों जरूरी है। चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या फिर हमारे घर में हमारी मदर्स हैं, या सोसाइटी में कोई भी पर्सन कोई भी काम कर रहा है, विमेन है, कोई भी काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली उनका एक ही गोल है, किस तरीके से उनकी हार्ड एंड मनी वेस्ट ना हो। हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ बजट की, तो इसके अंदर क्या बोलते हैं कि भारत एक साल के अंदर अंदर कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेगा, या फिर अगले साल आने में भारत कहाँ कहाँ पे फोकस कर रहा है ताकि वो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करा सके। अब हम बात करें कि निर्मला सीतारमन जी का ये 9th बजट है। यानी कि हम बोलें कि उन्होंने एक तरीके का रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर दिया है कि ऐसी महिला जिन्होंने 9th टाइम बजट को रिप्रेजेंट करा है इन अ कॉन्टिन्यूस वे। अब ये जो बजट है, इससे जुड़ा हुआ एक फन फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, या फिर एक ऐसी चीज बताती हूँ जो मे भी आप लोगों को पता होगी या नहीं भी पता होगी। एक डिस्कस करते हैं जो बजट में जितने भी लोगों ने काम करा है, यानी कि जितने भी लोग मिनिस्ट्री ऑफ बजट के अंदर आए हैं, वो सब मिलके क्या करते हैं। मैम आ चुके हैं। मैम लेट मी टेक 2 minutes टू फिनिश दिस अप। सो ये जो बजट है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है जो मिल के बनाते हैं, जितने भी लोग उनके अंदर जुड़े हुए हैं, इस बजट को पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी रखी जाती है। लिटरली हलवा बनाया जाता है और ये सारे मिनिस्ट्री के जितने भी लोग हैं उन सबको बांटा जाता है। उसके बाद ये सारे लोगों को अपनी फैमिली से मिलने के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, बिकॉज बजट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। अगर बजट हमारा लीक हो जाए तो मार्केट में अप्स डाउन फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। लोगों को पता चल सकता है पहले से कौन सा सेक्टर प्रोग्रेस करेगा, कौन सा सेक्टर फेल होगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्लैश हो सकती है। इसीलिए ये जो जितने भी लोग होते हैं हमारे मिनिस्ट्री के अंदर, इन सबको क्या किया जाता है, लॉक कर दिया जाता है एक सेल के अंदर, और बजट के पेश हो जाने के बाद ही इनको अलाउ किया जाता है कि अपने फैमिली मेंबर से मिल सके। सो नाउ वी ऑल जस्ट बैक टू दिस सेशन। वेलकम मैम। आई थिंक सो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, दोबारा से हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, 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 मेरी आ रही है आवाज अब?
यस मैम। हाँ जी, तो कहाँ छूटा था? मेरे को पता नहीं चला ना, एकदम से बंद हो गया मेरा सेशन। अब स्क्रीन शेयरिंग के लिए 1 सेकंड। हम मैम आप इनोवेशन 5 इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, है ना? इनोवेशन इकोसिस्टम्स फाइव टू 10 more minutes, तब तक आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बोल सकते हो या फिर मैसेज करके बोल दो कि जो भी क्लास में बात की गई थी कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है और आपको वो सबमिट करानी है, इसी सेशन के अंदर वो आपको मिलेगा कि क्या आपको बनाना है, किस पे बनाना है और कैसे सबमिट करनी है। सो स्टे ट्यून, कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, और अगर आपका कोई फ्रेंड अटेंड नहीं कर रहा है तो उसे मैसेज करके बोल दो, बिकॉज इसी सेशन के बीच में अटेंडेंस चार्ट शेयर किया जाएगा और साथ के साथ जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में होगा, रिपोर्ट के बारे में होगा, वो भी इसी सेशन के अंदर बताया जाएगा। हेलो? ओके। स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। Ma'am, your screen is visible now.
Hello. Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे बजट जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। हम आज बात करने वाले हैं इनोवेशन की। मैम वन इनोवेशन मिनट, आपकी जो ये स्लाइड है मैं शेयर कर देती हूँ। आप मुझे पेज नंबर बताते जाना, जब भी आगे करना हो आई विल शेयर दैट। आई विल सेट नेक्स्ट। ओके मैम। तो ठीक है, हम बजट 26-27 ड्राइविंग ग्रोथ इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। टुडेज माय टॉपिक जो है ये है हमारा टॉपिक कि कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं स्टार्टअप्स को लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम में। स्टार्टअप्स जो है हमारे पास कि कोई भी हो सकता है, जैसे हम घर पे बैठ के कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी हमारा जो छोटा सा ही काम है उसको भी हम स्टार्टअप्स में लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप की अगर बात आती है तो इनोवेशन हम लेकर चलते हैं। इनोवेशन जिसको हम आविष्कार बोलते हैं। आविष्कार में जैसे इनोवेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। किसी भी इकोनॉमिक पावर में एक फाउंडेशन का जो है एक रोल प्ले करती है। जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया था 26 में, उसमें ये पता चला है कि इंडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया जो इकोनॉमी है वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। देन है द यूनियन बजट 26-27 जो अब आया है आज, बिकम मोर देन अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इट इज इंडिया स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर इनोवेशन लेड डेवलपमेंट। इसमें भी जो है इनोवेशन की ही बात की गई है। इनोवेशन के थ्रू हम कैसे डेवलपमेंट लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट, देन इनोवेशन के लिए है, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए हमारी जो फाउंडेशंस हैं वो क्या है, स्ट्रोंग होनी चाहिए। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन है, जो अभी तक सर्वे हमने जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फिस्कल ईयर 26 था, इसमें जो जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव की है 7.4% तक जीडीपी ग्रोथ रही है। नेक्स्ट जो ग्रोथ है हमारे पास जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोथ जिसको बोला जाता है, जो अमंग ऑल द सेक्टर्स है, ये ग्रोथ भी हमारी 7.3% तक रही है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इतना एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, 11.21 लाख करोड़ रुपए तक का हम क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक स्टेबल है, स्टेबल ग्रोथ है। हो सकती है जैसे इन्फ्लेशन में स्टेबलाइजेशन लेकर आ सकते हैं, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देन जो हमारी कैपिटल क्रिएशन जो कैपिटल क्रिएशन है थ्रू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट में भी ज्यादा क्या है हमें इसको हेल्प करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट, इंडिया राइजिंग इनोवेशन प्रोफाइल। जो इंडिया की प्रोफाइल है वो एक ऐसी प्रोफाइल जो बन चुकी है एज ए राइजिंग इनोवेशन है। जो हमारी प्रोफाइल है वो राइजिंग इनोवेशन में गिनी जाती है। 2019 में जो हमारी पोजीशन थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो हम बात कर रहे हैं, 2019 में हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे 66 पोजीशन थी। अब है हमारी 2025 की जो रिपोर्ट्स आई हैं 38 पोजीशन रही है, 38 पोजीशन आई है, जो है हमारी जो है इनोवेशन प्रोफाइल को जो है दिखा रही है। ये जो प्रोफाइल है हमारी जो 26 में कंटिन्यूड रिसेंट टुवर्ड्स अप टू टॉप 30 कंट्रीज में जो हमारी है, ये जो इनोवेशन प्रोफाइल में जो हमारा रैंक है इम्प्रूव हुआ है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किससे रिफ्लेक्ट होती है, प्रोग्रेस इन स्टार्टअप्स। इसमें भी स्टार्टअप्स की ग्रोथ की बात की गई है, स्टार्टअप्स के थ्रू हमने इतनी ग्रोथ की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम ग्रोथ कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल में जो है इन्वेस्टमेंट वो हो रही है। जो कंज्यूमर हमारा जो इंडिया है वो कंज्यूमर नहीं रहा है हमारी टेक्नोलॉजी का, ये बिकम अ क्रिएटर एंड इनोवेटर ऑफ द ग्लोबल स्टेज। हमारा जो इंडिया है वो ग्लोबल स्टेज पर क्या बन चुका है, एक क्रिएटर बन चुका है, किसका, टेक्नोलॉजी का। हम अपनी टेक्नोलॉजीज को थ्रू आउट अक्रॉस द वर्ल्ड हम क्या है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट,
हम बात करते हैं आगे मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन। जो भी इनोवेशन की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग में और डिजिटली, ये है देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक पीएलआई, जितने भी प्रोडक्शन में इनोवेशन की जा रही है उसको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उनको और ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जो पीएलआई को इनहेंस किया जा रहा है, ओवर 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है जो है हमारे बजट में। 12.6 लाख जॉब हैं जो क्रिएट की गई हैं। जो हमारा मेक इन इंडिया का जो एक लोगो है, मेक इन इंडिया का जो की बात की गई है, इसमें पीएलआई जो हमारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया स्कीम को एनहांस किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है, इसके लिए 1.6 लाख करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल किया गया है, बिल्डिंग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। जो हमारी जो इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपीस का जो अप्रूवल है प्रोजेक्ट्स का किया जा चुका है। देन एप्लीकेशन ड्राइवन एआई, जो भी हमारी एप्लीकेशंस मीन जितनी नई नई एप्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एआई से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एआई को यूज करके एप्लीकेशन को क्या है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आते हैं लाइक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, सेक्टर स्पेसिफिक एआई मॉडल्स बनाए जा रहे हैं जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को और ज्यादा मजबूत बनाता है। देन नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल द इनोवेशन इंजन। ह्यूमन कैपिटल जिसको हम मानव पूंजी भी कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल में जितना क्या है हम ध्यान देते हैं उतना ही क्या है हमारी ग्रोथ ज्यादा मजबूत होती है। द इनोवेशन इंजन, ह्यूमन कैपिटल को एज अ इनोवेशन इंजन का नाम दिया गया है। विदाउट ह्यूमन कैपिटल कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। डेमोग्राफिक एडवांटेज में आते हैं 56.2 करोड़ एम्प्लॉयड पीपल इन फिस्कल ईयर 26। अब तक जो हमारा सर्वे आया है फिस्कल ईयर 26 का, वो क्या कह रहा है, 56.2 करोड़ पीपल्स को क्या है एम्प्लॉयमेंट मिला है, रोजगार जो है मिला है। 31 करोड़ वर्कर्स जो है रजिस्टर्ड हैं किस पर, ई श्रम पोर्टल पर, जो आगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक्सपेंडिंग आईआईटीज इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज को एक्सपेंड किया जा रहा है, आईआईएमएस को इनहेंस किया जा रहा है। एम्स, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्या है यूनिवर्सिटीज को क्या है एक्सपेंड किया जा रहा है। ग्रोइंग ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन का, वो भी इंक्रीज किया जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नीड्स रहेंगी, इसके लिए हम देखो स्किलिंग फॉर एआई। आजकल की जो ह्यूमन कैपिटल को उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स सीखनी पड़ेगी डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए। देन स्टार्टअप ओरिएंटेड एजुकेशन रिफॉर्म्स, जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है वो उसको स्टार्टअप ओरिएंटेड होना चाहिए। हमें लोगों को रोजगार बनाने के लिए, रोजगार लेने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए एजुकेट करना है। देन एनहांस रिसर्च फंडिंग इन यूनिवर्सिटीज, इसके लिए स्टार्टअप ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए जो हमारी फंडिंग है यूनिवर्सिटीज की उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए। देन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हमारी एजुकेशन को इस लेवल तक का बनाना चाहिए कि हमारा जो एजुकेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर compete कर सके हम लोग। इस तरह से हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके एज अ इनोवेशन इंजन की तरह इसको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनोवेशन कैटलिस्ट। जैसे ह्यूमन कैपिटल की हमने बात की है, ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हमारा रेलवेज, एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल नेटवर्क्स, ग्रीन एनर्जी, ये सब चीजें आते हैं, रोड, एयर जो है सब कुछ इसमें आ जाता है, जो हमारा जिसको हम अधोसंरचना भी कहते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म में। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके लिए देखो क्या किया जा रहा है, 99.1% को जो रेलवे नेटवर्क्स है उसको इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है। हमारी लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा रहा है। कार्बन फुटप्रिंट्स को क्या है, कार्बन की जो एमिशंस है उसको रिड्यूस करने के लिए 99.1% रेलवे का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। हमारी एयर कनेक्टिविटी देखो, एक्सपेंशन टू 164 एयरपोर्ट्स, हमारे 164 एयरपोर्ट्स नए जिनको
कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो न्यू एयरपोर्ट्स को है इंट्रोड्यूस किया गया है। डिजिटल नेटवर्क्स, हमारे जो भी नेटवर्क्स है वो 5G हैं। आजकल की स्पीड जो है इंटरनेट की स्पीड क्या है? 5G। 5G अवेलेबिलिटी इन नियरली ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसपे 5G अवेलेबल ना हो। इनेबलिंग नेक्स्ट जनरेशन एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, 5G अवेलेबिलिटी की वजह से हमारी जो एप्लीकेशंस है वो नेक्स्ट जनरेशन की हो जाती हैं, यानी कि एडवांस एप्लीकेशंस को हम यूज कर रहे हैं। देन ग्रीन एनर्जी, हमारी जितनी भी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसमें से 50% जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रही है। पोजीशनिंग इंडिया एज क्लाइमेट इनोवेशन लीडर, जो हमारी इंडिया को एज अ इनोवेशन लीडर, क्लाइमेट इनोवेशन लीडर भी बनाता है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम यूज करके एज इनोवेशन कैटलिस्ट इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, हमारा जो फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, यानी कि जो भी हमने इनोवेशन की बात की है, स्टार्टअप्स की बात की है, उसके लिए जो हमारा फ्रेमवर्क है वो हमने 3 टायर फ्रेमवर्क लेकर चल रहे हैं ग्लोबल लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए। एड्रेस क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज आती है हमारे पास, हमारी सप्लाई चेन्स है उसको सिक्योर किया जाएगा। रिड्यूस स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी, आपस में डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए। देन बिल्ड डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज, हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज इतनी होनी चाहिए, घरेलू क्षेत्र तक हम इतने मजबूत होने चाहिए कि हम डेवलप हाई पे ऑफ टेक्नोलॉजीज, इतनी टेक्नोलॉजीज को हम इम्प्रूव कर सके, इनोवेट कर सके जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाएं। देन ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन, हमारी जो मार्केट्स है उसको ग्लोबली इंटीग्रेट किया जाए। स्ट्रेंथन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉर वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिटिवनेस, इसके लिए जितनी हमारी मार्केट है उसको ग्लोबल मार्केट बनाया जाए ताकि हम वर्ल्ड वाइड कम्पीट कर सके। देन इसके लिए स्वदेशी है ना, देखो this framework moves beyond traditional Swadeshi to deep integration into global value chains, ensuring India become strategically indispensable. हमें स्वदेशी अपनानी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम क्या है अपनी इंडिया को बेसिक लेवल पर, अपनी डोमेस्टिक लेवल पर क्या है इंक्रीज कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, देन रोल ऑफ बजट की हमने बात की है, जैसे कि हमारा जो ये बजट आया है 26-27 में, उसका क्या रोल रहेगा हमारे किसके इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो हम लेकर चल रहे हैं। इसके लिए देखो फाइनेंशियल रोल, फाइनेंशियल यानी कि इतने रिसोर्स अवेलेबल करवाए जाएं, फाइनेंशियली हम इतने कैपेबल हो सके ताकि हम इनोवेशन कर सके। ये जो फंडिंग की जाएगी किसके लिए? थ्रू टारगेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए वो बजट में इसकी बात की गई है। देन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जो भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए इसकी बात की गई है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इसमें बात की गई है, जो आज का बजट हमने आज जो लाइव सुना है। देन सेकंड रोल देखो क्या है, इंस्टीट्यूशनल रोल। इंस्टीट्यूशनली हम क्या है स्ट्रेंथ करना है अपने आप को, स्ट्रेंथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी कोहेरेंस फॉर इनोवेशन। जितना भी हमारा गवर्नेंस सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको इस तरह से कैपेबल बनाना है, इस तरह से पॉलिसीज बनानी है ताकि इनोवेशन को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। देन थर्ड, टेक्नोलॉजिकल रोल, टेक्नोलॉजी प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी होनी चाहिए? डिजिटली, इस तरह से इसको प्रमोट करना है कि हमारा टेक्निकल रोल इंप्रूव हो जाए। एआई एडॉप्शन, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एडॉप्ट करना है, ऐसी टेक्निक्स डेवलप करनी है जो आज के युग में हमें एआई को compete कर सके। एंड टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन अक्रॉस सेक्टर, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हर सेक्टर में हम क्या है इसको यूज कर सके। देन फोर्थ है सोशली हम इतने मजबूत हो जाएं, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, इसको हम एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट, हमारी जितनी भी स्किल्स हैं, स्किल एनहांस को ज्यादा जोर दिया गया है टू बिल्ड ह्यूमन कैपिटल फाउंडेशन। फोर्थ जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, ग्लोबल रेट,
ग्लोबल रोल, हमारा जो है रोल है पोजीशनिंग इंडिया स्ट्रेटेजिकली इन ग्लोबल सप्लाई चेन एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल इनोवेशन नेटवर्क्स। हमारा जो जितना भी इनोवेशन नेटवर्क्स है उसको ग्लोबल रोल यानी कि इस तरह से बनाया जाए कि ग्लोबली हम मार्केट में compete कर सके। तो ये हमारी 5 स्ट्रेटजीज थी जो आज के बजट में जो कवर की गई। देन नेक्स्ट, टुवर्ड्स एन इनोवेशन ड्राइवन इंडिया। जितने भी हमने पीछे अब बात की है ह्यूमन कैपिटल की, इनोवेशन की, एआई की, ये सब क्या है हमारे इनोवेशन को की तरफ लेकर चलते हैं हमारे इंडिया को, जो है कैसा लेकर जाते हैं, इनोवेशन ड्राइवन इंडिया। हमारा इंडिया को इनोवेशन की तरफ लेकर जाते हैं, ग्लोबल इनोवेशन हब, लीडिंग एंड एप्लीकेशन ड्रिवन एआई एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो इंडिया है वो क्या है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन ड्राइवन एआई इस तरह से बनाया जाएगा कि हमारा जो एक इंडिया ग्लोबल इनोवेशन हब बन जाए। देन मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एंड इंडस्ट्री 4.0 कैपेबिलिटीज। इसमें 4.0 कैपेबिलिटीज की बात की गई है। जितना भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेक्टर है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 4.0 कैपेबिलिटीज पर काम करते हैं। देन डिजिटल इकोनॉमी लीडर, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी एक डिजिटल इकोनॉमी लीडर की तरह प्रूव होकर सामने आए। इस तरह से जो हम आज का जो बजट है इस तरह से ये रोल प्ले करता है कि कैसे हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो कर सकते हैं अपने the economic survey 2026 reveals India as at a historic turning point। ठीक है, हमारा जो बजट है ये आगे हमारे इंडिया को हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट पर लेकर जाएगा, फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमी टू अ नॉलेज ड्रिवन, इनोवेशन लेड, ग्लोबली इंटीग्रेटेड पावर हाउस। ठीक है, हमारा जो इंडिया है एक नॉलेज ड्रिवन बन जाएगा, इनोवेशन लेड हमारी जो ग्रोथ होगी इनोवेशन लेड होगी। बजट 26/7 इज नॉट मेनली अबाउट नंबर्स, इट इज अबाउट शेपिंग इंडियाज फ्यूचर। ठीक है, हम इंडिया के फ्यूचर की बात करेंगे। स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल नेशन, हमारा जो नेशन है वो क्या है, एक इनोवेशन हब की तरह क्या है बनकर हमारी इकोनॉमी में प्रूव होगा। देन नेक्स्ट मैम, I think this is the last slide. So this is for the this is for today. Thank you very much. आपको अटेंडेंस जो है लिंक गूगल फॉर्म के लिए, गूगल फॉर्म शेयर किया गया होगा आपको, तो आप प्लीज ये फिल कर दो जो अटेंडेंस लिंक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल सेशन। सभी स्टूडेंट्स को मैंडेटरी है ये अटेंडेंस लिंक को फिल करना। साथ के साथ जो एडिशनल डिटेल्स होंगी, जो भी बताया जाएगा रिपोर्ट के रिगार्डिंग या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ ग्रुप में डाल दी जाएगी। सबके लिए मैंडेटरी है कि जो भी उन्होंने फोटोज क्लिक करी होंगी वो सब शेयर कर देंगे ग्रुप में। एंड अपना वैल्यूएबल जो भी आपको वैल्यू मिली है इस सेशन से बजट के थ्रू, वो आप सब शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो पर्सनली डिपार्टमेंट में आके पूछ सकता है, या फिर अभी भी हम यहाँ पे 10 मिनट्स के लिए क्वेरी सेशन चला रहे हैं। किसी का भी कोई भी क्वेरी है वो अभी पूछ सकता है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। एंड फॉर द लास्ट टाइम एज वी आर गोइंग टू दिस सेशन, तो सभी अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि हम एक फोटो क्लिक कर लें। प्लीज, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू टर्न ऑन देयर कैमरास। आई होप आप सबने आज का सेशन थोड़ा एंजॉय किया होगा। जिस किसी ने भी अभी तक अपना वीडियो ऑन नहीं करा है, सो मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, एक बार ऑन कर लो। हर्षिता मैम प्लीज एक फोटो क्लिक कर दो।
Thank you all for being us today with us. And students' attendance link has been shared in the chat box. Make sure that everyone mark their attendance. वो गूगल फॉर्म आप फिल करोगे तब भी आपकी अटेंडेंस जो है मानी जाएगी, अदरवाइज आप आपकी अटेंडेंस हमारे पास आ नहीं पाएगी। सो स्टूडेंट्स, किसी को अगर डाउट, कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। Okay, we will ending now. Okay. 2 minutes. Okay. Type A in the chat box after marking your attendance so that we get to know कि किस किसने mark कर ली है. गर्ल्स डू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, अगर कोई बीच में क्लास अटेंड कर रहा था और किसी अर्जेंसी की वजह से उसे जाना पड़ा, एटलीस्ट वो अपनी अटेंडेंस आके मार्क कर दे. डन विद अटेंडेंस. जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सबकी अटेंडेंस डन हो गई ना? गूगल फॉर्म हम, मुझे लगता है हम शेयर कर देंगे उन ग्रुप में ना, जिसका रह जाएगा वो फिल कर देगा। Yes, ma'am. Okay, so we are wrapping up the lecture. So hopefully आप सबको ये सेशन एंटरटेनिंग प्लस एजुकेटेड लगा हो, और साथ के साथ हम थैंक यू करते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को कि उन्होंने अपना संडे हमारे साथ कंट्रीब्यूट करा. एंड ऑब्वियसली ये एक ऐसा सेशन होता है कि हर स्टूडेंट चाहता है सुनना, बट किसी ना किसी काम की वजह से वो छोड़ देता है. तो मे बी आप सबको वैल्यूएबल लगा हो सेशन, या फिर मे बी कोई भी अगर प्रॉब्लम आई हो किसी को तो वो हमसे बाद में कंफर्म कर सकता है. मैम एंड कर दें सेशन. यस, ओके स्टूडेंट्स, थैंक